Welcome back to again DSA live classes. So we will be seeing the one another problem. So running sum of 1D array. Okay. So this is the questions of 1D array, and just again as always I will be giving you the again 5 to 10 minutes. Think about that questions. What's the question is? Okay. Explain the question first of all. Then after you can just think about the approach of this question, and then you can tell me, Aditya, this is could be approach. We can implement it. Okay. Okay, let's start. First of all, understand the problem and then understand the, or then tell me the approach. What would be the approach? Please mute your mic. Who's this? तो ये ना आज की सबसे सिंपल, मेरे को लगता है अब तक की सबसे सिंपल प्रॉब्लम होगी. दैट्स आई एम गिविंग यू. सो आई कैन एक्सपेक्ट यू कि यू कैन फाइंड द सोल्यूशन व्हाट वी कैन डू. ओके. और फ्रॉम आई गेस मंडे को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा. सॉरी, नॉट मंडे, दैट ट्यूसडे. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो उसको मिस मत करना, क्योंकि मेरा मन किया तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं डालूंगा. हाँ, इसलिए मेरे को कम से कम उसमें 10 से 15 लोग तो चाहिए क्लास में. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद हम लोग कर देंगे टूडे पे. ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास होगी, ट्यूसडे को अपनी. इसके बाद ओके. use previous sum concept. Okay, Abhijit is saying that we can use. Okay, where I am just writing this message, you, if you are not able to tell the approach via mic or open your mic, so you can just type in the community TV chat section. This is my first class. Abhishek, this is your first class, so you can watch the previous recording, which I have already told you. You will get the link in the Schedule CL channel. Okay, so can anybody just tell me what's the problem is? What segmentation fault? What, please segment, what is, tell me the what's the problem. But first of all, explain the problem. Actually, what is the problem is? Given an array, define a running sum of an array. Like जैसे 1 2 3 4 दिया है, तो इसका हमें सम निकालना. जैसे फर्स्ट वन टर्म का 1, देन उसका 1 हो गया, तो 1 + 2 का 3 आ गया, 1 + 2 + 3 का आ गया 6, देन 1 + 2 + 3 + 4 का आ गया 10. Okay. So what we need to do, we need to return the array. That array contains what? Sum of numbers. Yes, sum of numbers. So what we are doing here, so basically your question is saying you have given an array, right? Nums array, and we define a running nums of array, that is the running nums of I sum 0. So that is something like theory you have given. So you can just easily set that we define an array running of sum of an array as running sum I is equals to num 0 ... sums I. So what is actually saying, you have given a nums array. Okay, let me just not do here. Let's move towards our, okay. So I hope so it is visible to everyone. So what we are going to do, so we have given another nums array. So this is the array we have given, and it is saying we need to return the 1 3 6 10. So basically what is this 1 3? So you have to return the running sum. What is actually the running sum is you have given this array. So if you want to like find out the sum of this first number, you that remains same. If you want to find out the second number, so what you need to do, you need to plus this 2 number, that is the 1 + 2. If you will do the sum of this particular number, then you will get the 3. Then after that, you will be doing the sum of which one? Like, tell me one thing, which sum you will be doing? 1 + 2 + 3 or 3? That is the sum that is coming to the 2 + 1 3 and 3 + 3. What you will be doing? 1 + 2 + 3 करोगे, या फिर जो 3 आया इसका 3 का +3 ऐड करोगे. So basically at the end you will be doing basically you need to just find that kind of thing. 1 + 2 + 3 nothing but the 6. Then again you will be checking okay, the summation of the 6 is this. Then I will be doing 6 + 4, that is the 10. So I will get this kind of number. That is the running sum of array. Okay. Now let's understand with this another example. Okay.
So let me take another example. Let's say we have given let's say some bigger array. Okay, so 2 2 2 3 6 and 3 and 9. Okay, so we have given an array, and that's the reason which is I'm going to tell you why what we need to do. So we have given a nums array, and I need to return the array that contains the summation. So what I will be doing, I will keep remain 2 as it same as it is. Okay, and then what I will do, I will just plus this thing. 2 plus 2 is what? 4. 1 second. 1 second. Okay, so 2 plus 2 is how much? 4. Then what I will be doing, I've got this 4, then I got to 4 plus 2 is 6. And then what I will be doing, I will do the 6 plus 3 is how much? 9. Then what I will be doing, then again I will get the 2 to the 4 of this, then 4 to the sorry, my bad, I just do the again I'm doing 2 is come here again, then 2 plus 2, then you will get the 4. 2 plus 2 is you will get the 4. And again what you will be doing, you will be again checking okay, 4 plus 2 is how much? 6. Then 6 plus 3 is 9. Then 9 plus 6 is what is it? 15. And 15 plus 3 18. And 18 plus 9 is how much? 27. 27. Yes. So we need to return the this kind of result array, or we need to actually we don't need to return any array, because I guess okay, we need to return the, so we have to return the array actually. So at the end we will be returning this result array. It depends on you. You will be returning this array, original array, or you will be creating a another duplicate array. What like that's depend on approach. But tell me one thing: ki this problem is clear or not? Whatever the problem is saying, what you need to do. You can see here again the second example is saying 1 1 1 1. So again 1 plus 1 is 1. So is this same as 1 here? Then 1 plus 1 is 1. Then 2 become, then 2 plus 1 is again 3. 3 plus 1 is 4. 4 plus 1 is this one is 5. So basically I can say just one thing to you, or I can say one thing to you. If you have done the yesterday problem, or if you have the some concepts related to yesterday problem, then you can easily you can do this problem literally. So I am giving you again this time for solution. If you have any kind of solution in your mind, you can explain. Otherwise I will be at the end, eventually I will be explaining you. But tell me, what's the approach to solve this? A sum plus I is equals to A of sum A. Okay. Tell me the brute force approach. What could be the brute force approach for this? First of all, मतलब नम साइज को आगे रन मतलब इंक्रीज करते जाएं, वो जो उसका पहले वाला इंडेक्स है उससे, और जो प्रीवियस इंडेक्स का सम है वो रिस्टोर कर लेंगे i माइनस वन में, ये रिपीट कर लेंगे अंतिम. अच्छा. Okay, anybody else? हेलो सर. Let's go to even so I of is already taken. Okay. हाँ. हेलो सर. हेलो. हाँ जी, बोलिए बोलिए. सर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का. सम इज इक्वल टू 0 असाइन कर देंगे, और एक लूप चलाएंगे नम्स डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस करते जाएंगे, और सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स i, और नम्स i इज इक्वल टू सम कर देंगे. सर ये रन कर जाएगा, फिर रिटर्न नम्स कर देंगे. अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी? सर मैंने ब्रूट फोर्स नहीं किया सर, यही ये दिमाग में आया, यही कर दिया अभी पहले. तो 4 लाइन का कोड है बस. चलो ठीक है. एनीबॉडी वांट्स टू गिव द ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर दिस? ब्रूट फोर्स को इतना बोलो. यार मेरा नेटवर्क खराब है कि तुम लोगों का क्या चक्कर है? नेटवर्क सही हो गया, ऐसे ठीक हुआ है.
नहीं, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं. चल रहा है कुछ। Okay, so tell me, yeah, you are saying something. Please mute your mic. Otherwise, if you want to say something, just say. Otherwise, just mute your mic. Don't. Please, don't try to interrupt the class because all other people are saying. Or if you are on the like background noise, if you are taking this lecture on like that's a coming some background noise from your side, so just you can type your approach into the community live chat section. I am just seeing there. Okay. Chetan has given the one approach that is also okay. Shivalika has given the one approach. Okay, what could be this? I'm asking what is the brute force approach for this? I'm asking brute force. Sir, we are iterating n plus 1, So then we first initialize, then loop लगाएंगे उसको और इंक्रीमेंट करेंगे. so currently you whatever like I think is 2 to 4 people are saying कि whatever the approach is that is explained by the 2 to 4 people. They are saying that we will be using one for loop. The complexity for this algorithm is big O of n, right? Yes. I'm saying कि what is the actually the optimal approach could be for this? Oh, not optimal. Sorry, it's a brute force. उसने बोला अगर ब्रूट इंटरव्यू फोर्स में के बोला लिए एक नया नया एरे बनाना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ पर एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं. तो नए एरे में जो भी सम होगा हर बार हर बार एरे को ट्रैवर्स करेंगे एंड आंसर फाइंड करेंगे एंड देन विल पुट दैट एरे इन सम इनटू द न्यू एरे. very good, excellent, something interesting is coming. So you are saying कि space complexity for your approach is big O of n and time complexity for your approach is what? N Same square, big yeah. n O square. of n square. Correct, right, excellent answer, and that's I want. So let me tell you what she said. So the optimal approach for this problem is nothing but the oh sorry why I'm saying optimal, yeah, it's a brute force. So brute force approach, basically we start from the brute force, but currently in this session it's going to you have reached to the directly on the optimal approach. The brute force approach is nothing but the you will be creating another array. Okay, so what you will do, you will create like another vector. Okay, that is the nums vector. Okay, vector is nothing but the you can create. Okay, let me just do the simplify. So you are creating one array int arr. Okay, then what you will be doing, you will be running a loop from I is equals to 0 to I less than n and I plus plus. The next time what you will be doing, you will be again using the another for loop and you will be starting from the j is equals to where I will be starting from j is equals to 0. Tell me, who is telling me? Yes, J is equals to 0. Okay, j is equals to 0. Yes. J is less than n or something else. N. I maybe. I. No, Not I. maybe. Yet it's I. Correct. And j plus plus. And then in this body, what we will be doing, suppose I have created let's say the given the name of this array is int result. Okay. So I'm just defining like okay, you can define it the size wise and all. Result of I plus is equals to result of nums of We need to create a sum. j. Why we need to create a sum? Listen, so what we are going to do, we have a one I is equals to 0, right? So let's say we have given an array 1 2 3 again. नहीं Sorry? नहीं एक्चुअली आप इनर फॉर लूप जब रन कर जाएगा उसके बाद हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे ना रिजल्ट में. हाँ, that's you can do it. इसलिए I'm not writing like what you can do it ki whatever the result I is containing, yeah, right? So what we have to return the array that contains this, right? Are you getting my point? What we have to return the array that's containing result, right?
So what I can do, I can return the result array or not, because result array is containing the each part of the sum, or you can say that the each index is contains the part of the sum. समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? Listen, I just trace it. Okay, let's trace this particular code or try run this code. So I am here and J I am putting here. Okay. N value is how much? 4. Or not a n value is 4. It's let's say 3 because indexing is starting from the 0. So what we will be doing? J is also starting from the 0. So I am just writing here somewhere I is equals to 0 and J is equals to 0. Control come inside because J I is like, listen, J is less than I and I is equals to less than I. So what I will be doing, I will be creating another array, and then what I will do, J is starting from the 0 but goes to the 1. कहाँ तक जाता है ये I तक, मतलब I तक जाएगा, तो I की वैल्यू अभी करंटली क्या है 0, J की वैल्यू क्या है 0. कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? तब होगा क्या कि जैसे क्या होगा कि अब जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये 0th इंडेक्स है. ओके, 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. तुम ये कह रहे हो कि आई से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करना, आई और जे को लेना है. ठीक है, आई और जे को लेना है और इसके साथ क्या करना है तुमको, इसके साथ तुमको ट्रेवर्स करना है. आई की वैल्यू ट्रेवर्स होगी 0 से लेके n तक, आई प्लस प्लस करते जाएंगे. अगर ऐसा नहीं होगा तो लास्ट में जाके क्या कर देंगे कि वैसा का वैसे एरे सेम हम रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे होगे कि एक आई लोगे, आई के साथ जे लोगे. अब जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई तक जाएगी. मतलब जे जैसे जैसे इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करा तो मान के चलो जैसे आई की वैल्यू अभी 0 है, जे की वैल्यू भी अभी कितनी है, 0 है. ठीक है, अब मुझे तुम लोग ये बताओ, मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन ये है, थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा. थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा? जस्ट टेल मी वन थिंग. कॉपी पेन लो, एक बार खुद से मुझे बताओ कि यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा. आएगा. आना नहीं है तो क्यों आना चाहिए? रीजन? सर वो इंक्रीमेंट होने के बाद दोनों इक्वल वैल्यू आ रही है. हाँ, इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू के इक्वल तक रन करना चाहिए इसे. इक्वल तक रन जाना चाहिए, यानी कि जे लेस देन इज इक्वल्स टू आई तक, राइट? कितने लोग कह रहे हैं कि yes, sir. जे लेस देन आई है? चलो इसको ट्रेवर्स करके देखते हैं कि मैं सही हूँ या तुम सही हो. मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा. मैं तो कह रहा हूँ कि तुम लोग जैसा बोल दो. तुम कह रहे हो कि इसको इज इक्वल टू तक करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू तक करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जानबूझ के लिखा था कि ये तुम खुद से एक बार ट्रेवर्स करो इसको अपने पे और 5 मिनट सोच के बताओ कि यहाँ पर इज इक्वल टू वाली लगेगी कंडीशन कि नहीं लगेगी. अब देखो यहाँ पर अगर हम इज इक्वल टू वैल्यू नहीं लगाते तो क्या होता? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इज इक्वल टू, अच्छा चलो इज इक्वल टू वाली लगाते हैं तो देखते हैं आई हियर है 0 पे है और जे तुम्हारा कहाँ पे है, 0 पे है. ठीक है, ओ सॉरी ये आई था. So I is on 0 and j is on 0. Same thing is here. What I am doing here, I am saying कि I and j is same time. So basically I is 0, j is initialized with the 0, j is less than is equal to I. Yes, condition true. What will happen? Tell me. Nums of result of I is how much? 0. That is the number that is placed with the 0. So what you can do, you can initialize with the result array with the zeros. Okay. So if you want, so you can initialize with the 0. Okay, and after that I'm assuming this thing because this is the algorithm. I cannot write the whole things. You have to do these things with your own self. Okay, when you will be writing the code for this brute force approach. But currently, listen, just assume this thing. All the result array is initialized with the 0. Okay, so don't confuse with this thing. So the result I, nothing. The result 0 is contains what? Result 0 contains is 0. 0 is equal to 0 plus nums of j. Nums of j is how much? 11. 11 plus 0, 11 come at that 0th index. Am I wrong or not? Am I wrong or right? Isn't it? समझ आई कि नहीं आई क्या करा मैंने? Yes sir. है ना? The result of I n plus is equal to nums of j. Then what we will be doing? We will be doing the j plus plus. Now this time condition true or false? Sir, false.
false. Why false? Because 0 is now this time j becomes 1 and I is currently 0. What we will do, we will increment, we have incremented the j here now j will not increment, so basically j incremented, and now what will happen, I, so currently I am taking upper side, so I will increment and j again start from the, so I become 1 and j become again from 0. So j become again from 0. Am I right or wrong? Again tell me, j 0 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि 0 से है, 1 से तो होगा नहीं. तुम Yes, लोग सोच रहे होगे कि यहाँ से होगा क्योंकि इनर लूप है, तो i की हर एक वैल्यू के लिए j कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा. ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है फॉर लूप का. तो अगर j 0 से स्टार्ट होगा, j बोलेगा आई एम ऑन 0, 0 इज लेस देन 1 या 0 इज लेस देन 1, कंट्रोल कम इनसाइड, देन इट इज सेइंग अगेन कैलकुलेट द what 11. So what is the value that is present at 0 at result array? 11 is equals to, so that is also the same thing we are doing here ना. कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है 0th लेवल पर, सोचो 11 है. 11 के बाद हम लोग दोबारा से 11 को ऐड करेंगे, देन 11 प्लस 2 कितना होगा, नम्स ऑफ आई कितना चल रहा है अभी, रिजल्ट ऑफ आई कितना है, अरे यार रिजल्ट ऑफ आई कितना है, रिजल्ट ऑफ आई तो 1 है ना. तो 1th प्लेस पर, ये 1th प्लेस नहीं है, ये 0th प्लेस है. ये भैया गड़बड़ मत कर देना तुम लोग, ये 0th है, ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स हियर है. तो रिजल्ट के 1 इंडेक्स पर क्या करो, नम्स ऑफ जे जो है वो क्या है, नम्स ऑफ जे क्या रखा हुआ है, अभी 0 है, तो 0 पे क्या रखा हुआ है, 11. 11 नम्स ऑफ जे है, याद रखना, ये 11 नहीं है, ये 11 है, दिस इज नम्स. So nums of j is nothing but this 11. So क्या करो कि ये जो 11 है, 11 को प्लस करो, तो that is nothing but रिजल्ट ऑफ i पर क्या रखा हुआ है. देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको दोबारा से और रन करता हूँ एक बार और, ठीक है. देखो तुम इंडेक्सिंग में मत हो जाना, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो पूछ लेना, क्योंकि इसमें ना इंडेक्सिंग, तभी इसी चक्कर में मैंने नंबर अलग अलग लिए हैं. ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ लिखता हूँ. देखो मैंने अभी दोबारा से आई और जे को मैं दोबारा से इनिशियलाइज, लेट मी जस्ट इनिशियलाइज आई एंड जे अगेन एंड टेक अनदर पेन, देन आई एम सेइंग कि नम्स दिस वन एंड रिजल्ट दिस वन. ओके, देन 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड देन 4 इंडेक्स. हियर इज 0 1 2. okay, not is here actually, let me just remove it, 0. So again I am saying I will start from 0 and j will start from 0. Okay, I will start from 0, j will start from 0. Correct. Okay, fine. I is currently what, I is currently 0 and j is currently what, 0. So what I will be doing, this is the nested for loop. So I will start from 0 and j will also start from 0. Condition true, I is less than n. Yes, j is less than I, बिकॉज आई लेस देन होगा तभी अंदर आएगा, तभी ये कंडीशन जे इनिशियलाइज होगा 0 से. एंड जे इज लेस देन आई, जस्ट जे इज लेस देन और इज इक्वल टू आई, इट इज हियर इज इक्वल टू आई. अब समझ में आया इज इक्वल टू क्यों लगा रहे थे, क्योंकि अगर इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो इसका सम हम इधर नहीं रख पाएंगे क्या, इसके बिना सोच के देखो एक बार. अगर ये जे लेस देन आई नहीं होगा तो यहाँ क्या रहेगा, कौन सी वैल्यू रहेगी, 0. So 0 less than 0 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. 0 is greater than less than is equal to 0. Yes, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल कम इनसाइड, रिजल्ट ऑफ 0 पर क्या रखा जाएगा, 11. रिजल्ट ऑफ 0 पर क्या रखा जाएगा, देखो i की वैल्यू कितनी है, 0. सो इट इज सेइंग रिजल्ट ऑफ 0 प्लस इज इक्वल्स टू, मींस रिजल्ट ऑफ 0 पर जो भी वैल्यू रखी हुई है, मतलब क्या रखी हुई है, 0 प्लस नम्स ऑफ j. नम्स ऑफ j इज हाउ मच, 11. So 11. So 0 plus 11 which is present at that result 0. तो ये इसका ऑपरेशन मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है. प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, दैट इज नथिंग बट दी एडिशन साइन करो उसी प्लेस पर. ओके, देन व्हाट विल हैपन, देन अगेन आई विल इंक्रीमेंट, वो सॉरी जे विल इंक्रीमेंट. सो जे विल बिकम हाउ मच, 1 and 1 is less than is equal to 0. No, 1 is less than is equal to 0. So what will happen, then again I will become what, I will become 1 and I increment it and j again start from the 0. So what will happen, then again it is saying that I is equals to 1, j is equals to again start from 0. That is saying result of 1, result of I is how much, result of 1 is equals to 1 plus nums of, so nums of how much, nums of nums I basically here, and nums of 0.
So nums of 0, basically you need to plus this particular two elements ना. So अभी क्या है, result 1 की वैल्यू क्या है, result 1 की वैल्यू पे तो 0 है. So 0 is equals to 0 plus nums of 0 पर क्या रखा हुआ है, 11. Then 11 आ जाएगा. तो अभी इस पर क्या आ जाएगा, अभी हमने एक लूप में we have placed the 11 here. Then again what will happen, then again j plus plus. So again j plus plus. So j plus plus means कि j will increment here. J again increment here. So result of 1 per, what we will be doing, we will be again plus the result of 1 plus nums of 1 this time. J become 1. So nums of 1 is how much, 12, and the value that presented result 1 is how much, 11. 11 plus nums of j or is how much, 12. Then the value which is come to 2 plus 1 3 and 1 1 2, 23 will come at the 1th place. That is nothing but this value will erase and 23 will come. Is it clear? This step is clear or not? अब तो मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक से बताया है, मतलब प्लस माइनस करके बताया है. और अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई. इसलिए इज इक्वल टू दिया है. टेल मी, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर. क्लियर सर, ओके. चलो फिर, आई गेस दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट दिस. आई एम नॉट गोइंग टू इटरेट दिस होल एरे, बट दिस इज द बेसिक थिंग वी विल बी क्रिएटिंग. सो आई कैन जस्ट इटरेट वन मोर. Okay, then I will move towards the optimal solution. So again, what happens ki, should I just iterate one or more iteration or just leave it here? What do you say? Tell me, do you want me to iterate all iteration or just leave it here? सर ऑप्टिमल अप्रोच की. ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है. तो ऑप्टिमल अप्रोच तो वैसे भी तुम लोग समझदार हो, पहले तो तुमने ऑप्टिमल अप्रोच ही बताई थी. इस बार तो उल्टा ही हो गया, मतलब मैं तुम लोग ब्रूट फोर्स बता देते, मैं ऑप्टिमल बताता. इस बार तुमने ऑप्टिमल बता दी, मुझे ब्रूट फोर्स बतानी पड़ा. बस सेम ही है जितने लोगों ने बताई है. ऑप्टिमल में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सेम अगेन. सो ऑप्टिमल में वी विल बी यूजिंग अ वन फॉर लूप अगेन. We will not be using, so basically the time complexity for this particular code is big O of n square, because approximately this will run towards the n, and this is also run the n because I value becomes the at the end n. So at the end this j value will go to the n. So basically at the end approximately the time complexity of this particular algorithm is n square, and the space complexity is big O of n. So now what we will be doing, we will be again checking here how we can optimize it, and how can we do this particular work into the big O of n and without using any extra space. So optimize approach is same that you have told me. I'm just repeating that thing who is not be able to understand what is actually the who are not be able to understand what is actually the brute force optimal approach. So what we will be doing, we will be implementing a one for loop. Again, we will start the for loop from 1. And now optimal approach is same that we have done yesterday, but there is something like some changes we have to do. So I is equals to 1, we will be starting our loop. I is less than n and I plus plus same. Then what we will be doing, we will be checking here nums of a. We will not be taking any kind of extra array. We will be changing the number in same array. So nums of I plus nums of I minus 1. That's it. And आखिरी में we will return nums. Same. That's it. हो Okay, गया. got it, bhai. So basically we are going to do 1, 2, 3, 4. Let me run for those who are not be able to understand it. What is I'm going to do here. So let's say the I value will start from here. Okay. It is saying nums of I is how much. Basically I'm just taking a nums of I minus 1 result and nums of I result. So nums of I is how much? 2. Oh sorry, nums of I is 1. 1 is equals to 1 plus nums of I minus 1. That is nothing but, sorry, my bad. Again, that is I values is starting from 1. So nums of 1, that is nothing but the 2 is equals to nums of 1, that is 2 plus nums of I1, that is the 1.
So basically 2 plus 1 is how much? 3. That place the nums of 3 here. So we are not taking another array, just we are just changing the elements into this array. So 1 will remain same. Okay, 1 will remain same. What we will be doing, we will start from here and just do the 2 plus 2 I. We will just doing this kind of thing, I plus I minus 1. So that is nothing but we are just taking a ith index and I minus 1 index. Okay, this is like that. Not this is wrong expression. Actually, this like this, nums of I plus nums of I minus 1. So we are taking a next number to plus here. So 2 plus 1 is how much? 3. Then I will increment here. Then I is currently is what? I is currently 2. Means 0, 1, 2, 3. So index is 2. Then I want to add the previous number. So how can I get it? I minus 1. So 3 plus 2 basically what here is not present 2. Here present is what? 3. So what I will do, I will add this 3 plus 3. I will get the 9. Then again I will increment. Then I is saying I want the I minus 1 number. Sorry, I minus 1 number. So I minus 1 number is 9 because we are changing on same array. This is not the another array. We are changing on same array. So currently is 9. So 9 plus that is the 4 is how much? 15. Sir, 9 not. Sir, 16. Sir, 3 plus 3, 6. Oh, sorry, 9 not. sorry. Okay. It's 3 plus 3. I have just done the multiplication. 3 plus 3 is 6 and 6 plus 4 is 10. Sorry, my bad. मेरे को 3 into 3 में और 2 into 4 में और 4 into 2 में इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है. मतलब इसमें मैं कभी कभार ऐसे 3 into 3 आता है तो मैं 6 कर देता हूँ और कभी प्लस होता है तो मैं 9 कर देता. ऐसा मतलब मेरा पता नहीं क्या मेरा मतलब कंफ्यूजन रहता है इनमें कि 2 into 4 में मैं पूछेंगे तो मैं 8 कर दूंगा लेकिन 4 into 2 पूछेंगे तो मैं 6 कर देता हूँ कई बार. तो है मतलब पता नहीं मुझे शुरू से ये है. हाँ सर ये 6 की जगह 5 नहीं आएगा कहाँ पर 3 प्लस ये 2 जो हो 1 जाएगा ये. हाँ ये एक सेकंड दोबारा करते हैं इसको. 5 आएगा 1 आएगा यहाँ पर. 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर 3 प्लस 1 2 होगा ना तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6 होगा क्योंकि देखो वो 5 माइनस क्या क्या आएगा? होगा क्यों 5 3 क्या नम्स ऑफ आई पर क्या रखा हुआ है? 3 रखा हुआ है. प्लस करोगे नम्स ऑफ आई माइनस 1 पर क्या रखा हुआ है? इसका एडिशन रखा हुआ है ना 2 प्लस 1. आई बस समझ. देखो क्या हो रहा है. सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है. देखो तो मैं एक एरे दिया गया 1, 2, 3, 4. तुमसे कहा कि इसका हमको सम निकालना है. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर कि आई हैव टेकन 1 हियर देन 2 प्लस 1 इज हाउ मच? 3. होगा कि नहीं होगा बताओ इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग? होगा सर. Now if I will come here. Now I is saying कि nums of I is 3 plus I want the nums of I minus 1. So what is the nums of I minus 1? I की वैल्यू 3 है. I क्योंकि हम सेम एरे में चेंज कर रहे हैं. ये अनदर एरे नहीं है, ये सेम एरे है जहाँ पे वैल्यू 2 की जगह 3 आई है. तो अब हम 3 प्लस 3 करेंगे दैट इज नथिंग बट दी 6. अब 4 प्लस 6 करेंगे तो दैट इज नथिंग बट दी 10. ओके सर. ओके थैंक यू. Okay, so that is the basic problem for today. I guess that's it.